हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बात पे बात करते हैं। और इस हफ्ते क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर आ रही है और ग्रेटा गर्विग की बारबी भी आ रही है। दो बिग बजट स्टार स्टडेड पोलर ऑपोजिट सिनेमैटिक जायंट्स रिलीजिंग ऑन द सेम डे। भाई पब्लिक ने तो हैशटैग भी बना दिया है बार्बनहाइमर। द फर्वर ऑफ द टू फिल्म्स इज इनसेन। तुम कौन सी फिल्म देखोगे? टेल अस इन द कमेंट्स। मेरी तो भाई ओपनहाइमर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड बाय द वे, फॉर यू लिंग्विस्टिक नर्ड्स आउट देयर, बार्बनहाइमर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोर्टमेंटो, लाइक ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच, और स्मॉग, स्मोक एंड फॉग, और अ पॉडकास्ट, आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट। और पॉडकास्ट से याद आया, इफ यू वांट मोर सच स्मार्ट फैक्ट नगेट्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, म्यूजिक एंड कॉमेडी, check out more episodes of our podcast Do I Like It by clicking on the playlist below. चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में लेट्स ड्राइव डाउन मेमोरी लेन एंड टॉक अबाउट सम हिस्टोरिक बार्बनहाइमर लाइक rivalries of big films that released on the same day and understand the box office and cultural impact of those releases years down the line. Just one caveat, when I say two films released together, I mean कि उनका पहला public release happened on the same day. So I'm not including any film festivals or industry premieres, है ना? Also not including films like Bahubali and Bajrangi Bhaijaan, which released within a week, but not exactly on the same day. Lekin that's so cool, right? Two films written by the same person, V.V. Prasad, and both of them so different yet so amazing. So let's get on with the list. सबसे पहले let's talk about the two films that, in my opinion, changed the face of Hindi cinema forever. Lagaan and Gadar. The two films were released on the 15th of June 2001. एक तरफ थी अनिल शर्मा की epic love story set against the backdrop of the Indian partition. A massive but mostly safe film, especially when compared to Lagaan. Because Lagaan क्या थी bro? It was another film set during the British colonial period, but about a cricket match. I honestly think Lagaan, with a runtime of over 3.5 hours, is the best screenplay I've seen in a Hindi film. While both films have turned out to be iconic in their own ways, Gadar was the bigger hit at the time, but then Lagaan is Lagaan, dude. Oscar nominations and all. But overall, it was a great time to be a cinegoer. Next, let's go to the year 2006. Two films released on the same day, 9th of June. Pheri and Chup. Ab Pheri was obviously the sequel to the 2000 blockbuster Hera, which was directed by Priyadarshan, but he didn't come on board for the part 2. Instead, the film was directed by Neeraj Vohra, who wrote the screenplay and dialogues for the original Pheri. Priyadarshan instead directed Chup, which clashed with the film franchise that he himself started. Both the films were bonkers ensemble comedies. They even shared actors like Paresh Rawal, Sunil Shetty and Rajpal Yadav. While Chup had a more glamorous leading pair with Shahid and Kareena, Pheri had Sham, Raju and Babu Bhaiya. Now looking back, I enjoyed parts of both films, but I think Chup was a superior film craft-wise. But then that could be the Priyadarshan fan in me talking. लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फेरी ने ज़्यादा पैसे कमाए थे, सो Now this clash isn't so much a clash of genres or stars, but of sensibilities. 9th November 2007 को दो films रिलीज हुई, which gave birth to two of the biggest actors today, Ranbir Kapoor and Deepika Padukone, with Saawariya and Om Shanti Om. Both filmmakers, Sanjay Leela Bhansali and Farah Khan, were coming back from Blockbusters with Black and Main Hoon Na respectively. So clearly this clash was big. For me, these two films came from two different schools of filmmaking. Saawariya channeling its inner Dostoevsky, and Om Shanti Om showing us that, escapist and fun commercial cinema can still have a heart. Also, Shah Rukh Khan ka six-pack versus Ranbir ka towel scene bhi zabardasti tha. Both films had some amazing music. Both films required you to suspend disbelief in their own ways. And both had a distinct visual and aesthetic tone. Om Shanti Om went on to become the highest grossing film of 2007, while Saawariya struggled to make a major dent in the box office. According to an interview that Farah Khan gave to Anupama Chopra, if Saawariya hadn't released on the same day as Om Shanti Om,
Om Shanti Om would have been the first film in India to cross 100 crores, a feat that was later accomplished by Gajani in the next year. Also, this clash started a supposed beef between Shah Rukh Khan and Sanjay Leela Bhansali because in 2015, when their films Dilwale and Bajirao Mastani clashed again, बहुत drama हुआ था. The next one is an old one. तो बात है साल 1975 की, जब मैं -22 साल का था. एक ही दिन पे दो फिल्म्स रिलीज हुई. One was Ramesh Sippy's big budget curry western magnum opus Sholay, and the other film was a low-budget devotional film, Jai Santoshi Ma, directed by Vijay Sharma, that didn't really star any big names. Sholay, which was made at a budget of 3 crore rupees then, was a flop in the first week. In an interview, Javed Akhtar said कि first week के बाद लोगों का शोले पे से एकदम विश्वास ही उड़ गया था. But he, along with his co-writer Salim Khan, had so much faith in their film that they put out an ad in newspapers saying कि भाई ये पिक्चर चलेगी तुम देख लेना. Mark our words type of stuff. And eventually when it was released in different parts of the country, it became the classic that we know it as today. एक तो I can't imagine एक टाइम होता था जब फिल्म जैसे धीरे धीरे करके स्टेट वाइज रिलीज होती थी. आज देखो ओपनहाइमर जैसी फिल्म पूरी दुनिया में एक हफ्ते के अंदर रिलीज हो रही है. मतलब काफ़ी स्मॉल वर्ल्ड हो गया भाई. तो स्टार्टिंग में तो शोले पिट गई थी. ऑन द अदर हैंड, जय संतोषी माँ, दैट वाज मेड फॉर अराउंड 25 लाख रुपीज, बिकेम अ ब्लॉकबस्टर. नॉट इमीडिएटली दो, ओपनिंग इसकी भी स्लो ही थी, बट इवेंचुअली कहा जाता है कि भाई लोग चप्पल वप्पल उतार के मूवी देखने जाते थे. द एक्टर हु प्लेड संतोषी माँ, अनीता गुहा, उसको लोग सड़क पे अगर वो दिख जाए कहीं पे तो लोग उसके पैर छू लेते थे. एंड इतना क्रेज हो गया था इस मूवी का दैट इट बिकेम लाइक अ फिनोमेना. द फिल्म वॉज ऑल्सो सेड टू बी मोन्यूमेंटल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल who started worshipping Santoshi Ma throughout the country, especially in the northern part. Now, I haven't seen Jai Santoshi Ma fully, but Sholay again is one of my favorite films of all time. And together, both these films were the number 1 and number 2 on the highest grossing films list that year. सोचो जरा, same day पे दो इतनी बड़ी films. I think something like that wouldn't happen until 2001 with Gadar and Lagaan, जहाँ दोनों ही films ने ज़बरदस्त business किया था. And finally, this pick is something that spawned a Bollywood David versus Goliath rivalry, a slick Pepsi ad, and two average but super hyped films. I'm talking about Mission Kashmir and Mohabbatein, both released on the 27th of October 2000. Now, to understand the context of this clash, let us rewind to 2000. Jan में आई थी कहो ना प्यार है, which was a massive success at the box office. Hrithik became a superstar instantly. And funnily enough, कहो ना प्यार है से एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी आमिर खान की मेला, और एक हफ्ते बाद आई थी शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. And both the films failed to perform. तो it was looking like a Hrithik versus the Khans kind of a situation. और कुछ टाइम बाद एक पेप्सी की एड आई which stirred up this beef even more. एड में कुछ लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं एंड द लूजिंग टीम मस्ट किस समवन फ्रॉम द विनिंग टीम, एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान की टीम जीत जाती है. सो दे स्पिन द बॉटल एंड यू नो लाइक दोज टीन हॉलीवुड मूवीज, एंड दिस वेरी ब्यूटिफुल गर्ल किसेस शाहरुख ओवर अ ऋतिक रोशन लुक अलाइक. मतलब ऑब्वियसली मतलब दे डिडंट मेक एनी रेफरेंसेस, बट हाँ वो पता चल रहा था कि वो ऋतिक को ही एक तरह से डिस कर रहे हैं. तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के बाद यू कैन ओनली इमेजिन जब ये दो फिल्म सेम डे पे आएंगी तो क्या हाइप रही होगी. ऑल्सो मोहब्बतें वॉज आदित्य चोपड़ा सेकेंड फिल्म आफ्टर द जॉनर डिफाइनिंग DDLJ, एंड ऋतिक का तो स्टारडम टॉप पे था ही. बट बोथ फिल्म्स हैड अ डिसेंट फर्स्ट वीक रन, जिसके बाद नीदर मैनेज टू होल्ड ऑन टू द ऑडियंसेस अटेंशन. एंड वी कैन आर्ग्यू दैट बोथ फिल्म्स आर इक्वली फॉरगेटेबल. At least Mission Kashmir had some great music. All Mohabbatein had was one meme: Parampara, Pratishtha, Anushas. On the box office, Mission Kashmir performed better owing to Hrithik's craze at the time, but it was a marginally better number, मतलब 1-2 crore here and there. Whether it feels so good talking about these huge numbers, है ना, 1-2 crore की बात ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, but ठीक है. Yes, this was a list of some of my favorite same-day release clashes that I think are bigger than Barbie-Oppenheimer in my opinion, because you know क्या फर्क पड़ रहा है बारबी और ओपनहाइमर
हमारा आर लाइक मिशन कश्मीर एंड मोहब्बतें इज बिगर, बट क्लैश व्लैश तो चलता रहेगा, कितने ही वीकेंड होते हैं एक साल में. द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट सो मेनी डाइवर्स फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बन रहा है. तो इस हफ्ते चाहे तुम टीम ओपेनहाइमर हो या टीम बारबी, आई थिंक वी ऑल आर टीम सिनेमा. ऑल्सो चाहे तुम किसी भी टीम के हो, दोनों फिल्म्स के अराउंड वी प्लान्ड सम अमेजिंग कंटेंट, वीडियोस, रिव्यूज, पॉडकास्ट्स एंड मच मोर. सो चेक आउट ऑल ऑफ इट ऑन द क्विंट. And as usual, follow Do I Like It की podcast playlist on YouTube or wherever you get your podcasts from. This was Prateek, and I'll see you in the next one.